हाय दिस इज समीना शेख हियर ऑन जूम चैनल और आज मेरे साथ में एक ऐसे मैन है जो फैमिली मैन से उतरकर अब आ चुके हैं द रेलवे मैन में. सो टॉकिंग टू सनी हिंदुजा एज आई जॉइन मी एज आई वेलकम सनी हिंदुजा ऑन जूम. थैंक यू सो मच समीना. आपने हमें शेक कर दिया है. उजागर कर दिया है. बट आई हैव टू से दिस टू यू सनी फॉर दैट मैटर कि आपके सिलसिले में मैन वाला सिलसिला काफ़ी चल रहा है. कभी रेलवे मैन, कभी फैमिली मैन. ये क्या है बेसिकली? और भैया भी. देखिए, आई बिलीव इन कॉमन मैन. दैट्स व्हाट वी आर. एंड कॉमन मैन के सामने जब एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन आती है तो वो कैसे बिहेव करते हैं. सो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट योर कैरेक्टर एंड अबाउट दैट मैन. सो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. आई लिव दैट. तो बस मैं वही कोशिश करता हूँ कि जो भी किरदार या जिस तरीके के मैन मेरे आगे आते हैं उनसे मैं कुछ सीख लूँ और उसमें कुछ अपने आप का सच पिरो के एक अच्छी पेशकश दी जाए सबके साथ कोलैबोरेशन में. तो वही कोशिश रहती है और बस यही कोशिश करता हूँ ऑनेस्टी और सच्चाई के साथ अपना काम कर सकूँ. उसी में मुझे सुकून मिलता है. एंड दैट इज़ व्हाट आई एस्पायर टू डू इन लाइफ. But I have to also say this, Sunny, that you have come a long way when it comes to the kind of career, the kind of projects you have done. Aspirants was one of those. Joe literally changed the game for you. Tell me about it. Yes, definitely. Aspirants did change the game, and credit to the makers, to the writer, director, and the entire team of Aspirants, all the actors. It was game changing for all of us. एंड अच्छा होता है ना इस तरीके की अगर कहानियाँ आती हैं. और एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, एज अ टेक्नीशियन, एज अ प्रोड्यूसर, सबकी इच्छा यही रहती है ना कि वो कहानी लोगों के दिल तक पहुँचे, उन्हें छुए और उनसे कुछ सीखें. तो वो मोटिव पूरा रहा. और उसके साथ साथ फिर आप भी ग्रो करते हो. और इसमें सबसे कमाल की चीज़ ये होती है कि जितना ज़्यादा प्यार मिलता है ना तो वो एज एन एक्टर, एज अ पर्सन वो मुझे पिघला देता है. विच इज़ वॉट इज़ रियली रियली स्पेशल एंड विच इज़ वॉट आई लुक फॉरवर्ड टू इन लाइफ. तो उसने इतना इतना पिघला दिया है ना, इतना मोम जैसा बना दिया है ना कि अब ऐसा लगता है कि जीवन ऐसे ही कटता रहे और आप उसमें बहते रहो. दैट्स व्हाट आई फील. Or, I was also talking about you recently to one of my friends, and I said, like, he's become the OTT star for that matter. Like, I have known you more for your work over there, apart from the work what you have done, so far. But, like, with your OTT recognition, it's like, अरे नहीं बंदे में ना काफ़ी seriousness है. Like, you feel like he's gotten completely into that character. And that is how I discuss about you. दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू. और वही कोशिश होती है. मुझे सीरियस रोल मिलते हैं तो मैं सीरियस हो जाता हूँ. क्या पता फ़नी रोल मिले तो मैं फ़नी भी हो जाऊँ. बट द नीड ऑफ द आवर जो होती है वो उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना वही काम है. एंड दैट्स व्हाट आई प्लान टू डू. एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मोर सच थिंग्स एंड मोर इंटरेस्टिंग रोल्स सो दैट आई कैन एक्सप्लोर माई सेल्फ एंड द रोल एंड द टीम and just deliver as many good performances as possible. But what attracts you personally, Sunny, when it comes to, movies, genres, or something you would like to experiment on? What attracts me is the people, frankly speaking. जो लोग होते हैं ना इसके पीछे जुड़े रहते हैं वो मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं. उनका क्या पैशन है, उनका क्या थॉट प्रोसेस है, उन्होंने क्या सोच के वो लिखा है और वो इसको कैसा बनाना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं. दैट इज़ व्हाट attracts me really. And that is what I look forward to. क्योंकि अगर आप एक स्क्रिप्ट या एक कैरेक्टर स्टैंड अलोन करोगे ना तो उसकी कोई अहमियत नहीं है. वो जब मिक्स होता है, सबके साथ कोलैबोरेट होता है, तब जाके वो शाइन करता है. तो दैट इज़ व्हाट आई एस्पायर टू. आई लाइक टू बी amongst such lovely minds, such passionate people, hardworking, honest, and love their work like I also do, like you do probably. तो मज़ा आता है उसमें. So that's what I look forward to.
But also, as I talk about your work, Sunny, आप खुद की इमेज कैसे रखते हो? Like on screen आप कैसे maintain करते हो versus off screen? You know, what kind of image do you prefer maintaining about yourself? Seriousness, shy, or like also like jolly and humorous side of you? नहीं, मैं कुछ ऐसा इमेज नहीं मेंटेन करता हूँ। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। जब अच्छा लगता है तो हंसता हूँ, बुरा लगता है तो रो लेता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि हम इस एज में हैं कि हमें बहुत इवॉल्व हो गए हैं हम एज एज ऑडियंसेस एंड एज पीपल। इंस्टाग्राम आ गया है तो मैं जो हूँ मैं वैसा रहना पसंद करता हूँ। एंड सिंस थोड़े बहुत लोग जानते हैं तो मैं उसमें उसकी एक अच्छी चीज़ देखता हूँ कि रिस्पॉन्सिबल हो के कि जो सही है या जो राइट है मॉरली एंड तो वो मैं चाहता हूँ कि वैसे रहूँ। बाकी फ़नी सैड सीरियस मैं सब हूँ। कोई एक चीज़ थोड़ी होता है। हम सब मिक्सचर ऑफ ऑल है ना। सारे रस हैं ना हमारे में। तो बस वही वाली बात है। एंड रिसेंटली आपका एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था, योर कॉन्वर्जेशन विद द पैप्स, व्हेन यू सेड लाइक मैं इंडिया को इंडिया जैसे जानना चाहता हूँ एंड नॉट एज द स्टेट्स। इफ यू कुड से समथिंग अबाउट इट, वो लिटरली वायरल हो चुका था ना। आई वाज लाइक हाँ, ये एक्चुअल में काफ़ी करेक्ट बात है। वाई वी शुड बी डिफरेंशिएटिंग कि ये स्टेट का, ये यहाँ का, ये यहाँ का है। और ये काफ़ी होता है ये कॉन्वर्जेशंस में भी, व्हेन यू आर हैविंग सम चैट्स विद योर पीपल। अरे दिल्ली के लोग ऐसे होते हैं, बॉम्बे के लोग ऐसे होते हैं। अरे बट बताओ कहाँ पर है बेसिकली। नहीं, मेरा ये मानना है कि जो जैसे वही वाली बात है, जैसे हम स्टेट्स या नाम लेते हैं, एक देश है हम आपस में ना, उसी तरह हम सबसे पहले इंसान है ना। अभी वो किस सिटी से है या किस मज़हब का है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो उसके अंदर भी प्यार और मोहब्बत है, उसके अंदर भी 5 सेंसेस है, उसके अंदर भी सांसें हैं, उसके अंदर वही खून है। और सबसे पहली बात तो वो इंसान है। सबसे पहले उसकी वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं ना कि तुम कहाँ से हो, किधर से हो और आपका क्या ओहदा है, वो सब सेकेंडरी है मेरे लिए। सो दैट्स व्हाट आई फील। सो वी शुड बी रिस्पेक्टेड फॉर दैट ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। बाद में यू सी व्हाट वर्क यू डू और व्हाट kind of aspirations you have, all those things come secondary. So that's what I feel उसी तरह। But I had to crack this silly joke with you, which is the Hinduja connection I have with you. I was in Hinduja college, and your surname is Hinduja. So I was like, मैं सनी को कभी भी मिलूंगी, I'll say this अच्छा, joke to him. हिंदुजा हॉस्पिटल में नहीं थी। नहीं, और मैं हिंदुजा हॉस्पिटल में एक बार जा चुकी है। प्लीज फेंट वेंट हो गया हिंदुजा हॉस्पिटल में ना जाइए। वेट बट लॉस कुछ ज़्यादा हो चुका था। हाँ, तो पानी वानी पीते रहिए जो भी चाहिए उसके लिए। बट हाँ, से जान है तो जान है। जान है तो जान है। But moving forward, you have also worked, like you have worked with Imtiaz Ali and you would like to reunite with him. But would you prefer doing a love story with him, because he's known more for that as well, apart from the serious films which he's done? बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। Yeah. इम्तियाज सर के साथ काम करने को जो दे दें अपन कर लेंगे। बहुत सिंपल है। ही इज़ अ लेजेंड। आई लुक अप टू हिम, द काइंड ऑफ वर्क ही इज़ डन एंड द काइंड ऑफ पर्सन ही इज़। आई मीन when we had collaborated for this film, he's such an amazing person, such a gentleman, such a kind hearted soul. So you don't think कि इनके साथ क्या काम करेंगे। इनके साथ काम करेंगे। There's no thoughts, no questions asked. But honestly, when I see his work also, for example, like, Thai massage, or, the even Highway, and even Sochanatha, Sochanatha is still like in that love wala zone, but she also on Netflix. He has been doing projects where you feel like Imtiaz Ali to romantic films karte hai, he's been known for that romance, rockstar kind of a thing, and suddenly you see a work like this, which is quite different. What do you have to say on that? I think it's great because you have to explore in different genres, different scenarios, and I'm sure वो शायद करना चाहते होंगे बट उनको मौका नहीं मिला होगा। बट मौका क्या नहीं मिला होगा, उन्होंने मौका उस तरीके से नहीं बनाना चाहा होगा। इट वाज अप टू हिम। बट देन व्हेन ही फेल्ट प्रॉब्ली ही विल नो बेटर ना कि उनको कैसा लगा। बट हमें तो अच्छा ही लगता है उनकी तरफ से जो भी आता है। आई एम लाइक अ प्रॉपर फैन बॉय ऑफ हिज वर्क एंड ऑफ हिम एज अ पर्सन। तो वो जो करते हैं बढ़िया करते हैं एंड आई फील वट एवर ही डज आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ इट। Talking about the railwaymen, it talks about a very serious subject. It's about, the gas tragedy which took place and how things were complicated. And it did exist. So it's like, there was something which was reality to it. And then bringing into picture. How was it for you? Was it somewhere terrifying also, the experience altogether? See, it's the event in itself, that night was a dreadful night.
you would not like to, you know, uh, see something like that or hear about that. But at the same time, when there is such a dreadful night, such a calamity, that is when the humanity comes together and the spirit, the hope. That is what is bigger, you know. Uh, People should know that, and probably uh, what is the so-called Gen Zs, Yeah. they don't know about it. They haven't heard about it. It's important for them to know what our history has been, you know, what people have gone through. There are so many unsung heroes who those have probably given their lives, you know, in order to save a few people, save a few children. Nobody talks about them. It's important that, you know, they are spoken about, and it's important that they are given that respect that, you know, was not given probably. And there should be something done in honor of those people. You know, nobody talks about that. उन्होंने क्या क्या किया है, कैसे कैसे बचाया है. If you see the series, I don't know if you have seen, people have gone all out to save others, you know. They have put themselves second, and the community and the people first. That's what our country, हमारी country की नींव है, which is what makes me feel proud. And also ये सच है, and proud of being an Indian. And I'm glad that it has come on such a platform where it can reach to so many countries, you know, on Netflix, so that people can just sit and see what all things have transpired in our country and how people have stood up for each other. So that is a great thing to propagate for our country as well. And I have to ask this, you have also worked with some amazing actors around you, and R. Madhavan has also been a part of this. जी How जी was जी it associating with him for this one? देखिए, मैं बहुत बहुत खुशगुजार हूँ टू हैव बीन इन द सेम प्रोजेक्ट एज के सर, माधवन, एंड दिवेंदु के साथ तो मैंने किया है काम. ही इज़ ऑल्सो माई सीनियर. एंड बाबिल के साथ आई हैड सीन्स, बट बाकी लोगों के साथ मेरे सीन्स नहीं हैं. दिवेंदु के साथ आई हैव वन सीन, बट वो मिस हो गया है, वो रह गया. आई वांटेड टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद, यू नो, के सर, माधवन सर. माधवन सर के साथ था बहुत हल्का सा, वी डिडंट हैव एन इंटरेक्शन, बट मैं चाहता हूँ कि और कुछ सीन्स हों उनके साथ. But when an actor plays the role of a journalist, तब क्या होता है दिमाग में? Like, do you also have all those thoughts कि अच्छा ये questions पूछ रहे थे ये लोग, should I just get into that character of it? Because the journalists have this habit, like especially the serious kind of journalist, they dig deep, you know, they go too much into detailing of everything. अच्छा तीन को ये हुआ था, 3-4 को ये हुआ था, and all these things, yeah. बट ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए था कि पता नहीं आपने देखा नहीं है शायद, जो आपके चेहरे को देख के लग रहा है. मैंने नहीं देखा, मैंने ट्रेलर देखा है. आई हैव तो सीन द मैं ट्रेलर आपसे- बट आई हैव नॉट सीन. तो मैं आपसे पूछता, ये आपको बताना चाहिए था कि ये कैसा लगा आपको. बट बहरहाल मेरे लिए, मेरी रिस्पेक्ट तो थी ही जर्नलिस्ट के लिए, पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई बाई मैनी फोल्ड्स, बिकॉज it's huge when you know, put yourself second, and your community, your country, your city, your state, and your people first. It's a huge job, huge responsibility to bring out the truth and fight against the wrong. uh, these people are the real heroes. That's what I feel. And as I take the conversation forward, I have to ask you, Sunny, what's next for you? What are you working on? What's your focus on? जैसे ही मैं बता पाऊंगा आपको सबसे पहले बताऊंगा. ये एक अच्छा, ये पता नहीं ये क्या ट्रिक है, why some of them are literally hiding all these things completely from me. कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं ना कि you cannot say anything about this until we talk about it, and it's also a respect to them, right? They are putting in so much money, they are doing everything. It's their right to announce, or you know, be able to share that news in front of people first. But the moment he says this to me that, you know, contract है, which also means कि काफ़ी बड़े projects आ रहे हैं pipeline में. छोटे प्रोजेक्ट के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. But still, you never know. But talking about your career journey also, Sunny, you have come a long way. The kind of projects you have done, you know, it's given you different recognition. Are you elated with how people are recognizing your work? And I'm sure wherever you go, especially Sandeep Bhaiya वाला भी जो है, that's like people talk about it, you know, completely. So tell me about it. And plus Sandeep Bhaiya is where you are playing the lead. जी जी जी. मतलब ये एक नेमत होती है एक एक्टर के लिए कि लोग उसको जाने, उसको पहचाने, उसके किरदार के नाम से उसे जाना जाए.
तो दिस इज़ ओनली अ ड्रीम विच आई एम लिविंग, यू नो, सो टू से. बहुत लोग चाहते हैं यहाँ पे पहुँचना और इस तरीके का मुकाम हासिल करने के लिए, बट आई फील ओनली ग्रेटफुल एंड हैप्पी दैट आई एम एबल टू लिव माई ड्रीम, आई एम एबल टू live my passion to the fullest, and I feel only grateful and in gratitude, and I really thank God and my parents every day for this. And who's been on your wish list, Sunny, in terms of actors, directors, actresses you would like to work with? As I said, Imtiaz sir, I always want to work with him. Also want to work with Zoya Akhtar ma'am, Abhishek Chaube, Anubhav Sinha ji, Rajkumar Hirani ji. So there are many people I want to work with. They all are there in my wish list. I hope I get to work with them. I get to collaborate with them. But at the same time, very very grateful and in gratitude where I am currently. Well, thank you so much for your lovely time and all the very best, Sunny. Looking forward to see more of your work. Thank you. Hi, this is Sunny Hinduja, and you're watching me on Zoom.